लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया था क्या करूँ absorption by roots. Okay. प्लस सेल स्ट्रक्चर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फिर फोटोसिंथेसिस हो गया, नहीं, ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया और इम्यूनोलॉजी हो गया, चार है, बराबर ना? ओके, so I think you start with the next chapter, that is absorption by roots. Okay, absorption by roots तो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. I think majority of the parts are given in your book also, except one or two things जो शायद mention नहीं किया तुम्हारे बुक में. बाकी I think everything is mentioned in your books. So I think मैं मिडिल पास पेपर को कंपेयर किया था. अब जिनका सलीना है पहला वो ओपन करना, फिर डायग्राम से उनको मार्क करना, ड्रॉ या लेबल करने के लिए. तुम्हारे केस में ब्रदर्स के कम्युनिकेशन में एक्सपेरिमेंट जितने देने चाहिए थे थोड़ा कम कर दिया. दे हैव गिवन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. मतलब सलीना में तो एक एक्सपेरिमेंट को 7 बार दिया है घुमा फिरा के, तो उसी को थोड़ा कम कर दिया तुम्हारे को. बट यू नीड टू नो ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स. सो विद दैट आपका सलीना का फर्स्ट पेज देयर डायग्राम गिवन 4.2 मिला. ओके, जिनके पास सलीना नहीं है प्लीज चेक, क्रॉस चेक करना. ये डायग्राम एक रूट का दिया हुआ है. आपकी किसका डायग्राम? नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला. दैट डायग्राम कैन बी आस्क्ड टू ड्रॉ. ये ड्रॉ करने के लिए आएगा. Then next page. Okay, online children, am I audible? Yes, sir. Okay. So Salina में 4.2
एंड तुम्हारे पास डायग्राम है, डायग्राम ऊपर ही नहीं है, नीचे वाला। ओके नेक्स्ट 4.3 डिफ्यूजन का डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे केस में। मेरा जो टेक्स्ट बुक में आईडी आपके बुक में सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड डिफ्यूजन इन वाटर, इनका नेक्स्ट पेज पे नीचे वाला डायग्राम। देन डायग्राम 1 मार्क के लिए आया था ड्रॉ करने। Okay, what are they giving you is verbal question, मतलब क्या if I put a potassium permanganate in the water, what would you observe after 1 hour? Redraw it. तो एक बीकर ड्रॉ करना, उसको शेड करना है, कलर चेंज या पर्पल कलर या व्हाटएवर कलर, तो उतना ही लिखने के लिए आपको एक ही मार्क मिलने वाला है। You not expect more than 2 or 3 marks in that case. That's one. Then comes 4.4. Okay, 4.4 टर्न करना एक्सप्रेस पे। हाँ, जो आपके बुक में क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का 2 डायग्राम दिए हुए हैं, तो आपके केस में 2 डायग्राम्स, इनके केस में वो एक टर्न करना पीछे, उसके पीछे और एक दिया हुआ है 4.5। 4.5 का डायग्राम जो है वो आपके आपके बुक में नहीं है। इन योर ब्रदर्स पब्लिकेशन इट इज नॉट मेंशन्ड एज सच। वो डायग्राम में एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, okay? It's not a new experiment as such। और 4.7 3 डायग्राम्स है, 4.7, 4.5 and 4.4 I guess। no no उसके पहले ना 4.4 ना, then 4.4, 4.5 and 4.7 तीनों डायग्राम ड्रॉ, अगेन 1 मार्क। रीजन, डायग्राम दिया जाएगा, okay? You have to only draw the observation of the diagram। तो वही डायग्राम को वापस ड्रॉ करना होगा, सिर्फ पानी ऊपर नीचे गया होगा वो दिखाना है। तो उसके लिए 1 मार्क के ऊपर जाना होना नहीं है। या इट वुड बी गिवन, क्या डायग्राम दे रहेगा, फाइंड एरर इन द डायग्राम, ऐसा भी आता है कुछ। There might be some error shown in the diagram and what can be changed in that case, get the appropriate result, तो वो भी होता है। अब 4.7 जो आपके बुक में 4.6 या 4.5 जो भी आपके 4.5 है जो आपके बुक में दिया नहीं है, okay? So it's only 1 word answer change रहेगा उसमें, बाकी डायग्राम remains same। So you can draw the previous diagram with a small difference और आपका वही पार्ट कवर हो जाएगा उसके अंदर। Next page, there are a lot of colorful diagrams, 6 diagrams are given, okay? आपके केस में टर्न करना नेक्स्ट पेज को, नीचे एक आरबीसी का दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे सेल का दिया हुआ है, प्लांट सेल का, एकदम टॉप नीचे बॉटम डाउन दे आर गिवन यू आरबीसी पार्ट गोयल ब्रदर्स, और एक लेफ्ट राइट साइड पे देयर इज अ ग्रीन पार्ट गिवन सेल का, प्लांट का। देन आपके सेलिना में 6 डायग्राम्स दिए हुए हैं, उसके साथ में एक बाजू में डायग्राम दिया जिसका लेबलिंग हेडिंग नहीं है, नंबरिंग नहीं है, सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है। सो द 6 डायग्राम व्हिच आर गिवन will be asked to draw, okay? कोई एक आएगा ड्रॉ करने, not all 6, but यहाँ 99% इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। Reason, they will give you the diagram and they will say क्या what would you observe after 1 hour, तो अगेन आपको चेंज करना डायग्राम के अंदर, या they will give you a proper drawing diagram, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना क्या what has happened to cell and what type of solution it is in। So these are 2 things which can be asked from that part। नेक्स्ट डायग्राम में जहाँ पे टर्जर प्रेशर वगैरह लेबल करने के लिए आ सकता है या ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। टर्न टू नेक्स्ट पेज। उसके बाद उस पेज पे जो डायग्राम दिए हुए समथिंग नोन एज CDEF, नीचे वाला, ओके? तुम्हारे केस में तो ब्लू बॉक्स में एक डायग्राम दिया हुआ है, हाँ वो भी दिया हुआ है और नीचे भी दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में, okay? That can be asked to draw or label। उसके बाद जितने भी डायग्राम दिए हुए, okay? All would be given and based upon that questions can be asked। कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, हाँ एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, टर्न टर्न
4.13 a TS of root दिया है तुम्हारे केस में ये वाला डायग्राम in your case this is like that के केस में वो ऐसा दिया हुआ है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा ड्रॉ as well as one important question from this part is डायग्राम के हेडिंग्स जो है ना वो दिए जाएंगे arrange the term in a logical sequence so how is the water moving in from where to where that you have to arrange in a logical sequence वो जंबल अप दे पाएंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा क्या show the pathway of movement of water from the soil to the xylem तो आपको वो पार्ट्स के नाम लिखना होगा that can be asked उसके बाद जितने डायग्राम्स हैं सबके सब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट मतलब क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर आपको आंसर्स करना एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जहाँ पे वो ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते टेस्ट स्ट्रिप का डायग्राम दिया हुआ है हमारे केस में ये वाला नहीं वो भी दिया नहीं चाहिए उसके पहले देना ये वाला ये वाला ट्रांसलेशन दिया ना okay so I think that's it from the diagram part of view so I want you to come to the first page यहाँ पे फॉन्ट का इशू रहेगा ही सबसे पहला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट रूट का फंक्शन क्या है 9th पास हुए ना बहुत से पास हुए होंगे हमने स्टडी ना वेरी लो क्लासेस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड holding the plant in the soil, anchoring the plant in the soil. There are 3 functions given in your book. Fix the plant to soil, absorb water and minerals from the soil. देखा तो technically 2 ही function है, नीचे का same function है. Conduct the absorbed substances through it, tissues to upper parts of the plant. तो एक plant को anchor करना, second to absorb water and minerals, third to absorb the water and minerals which is there, from there to pass it on to the upper part. That is what the function of root is. Normally exam में अगर आया तो 2 marks, not more than the 3 mark क्यों कभी नहीं पूछ 2 mark के लिए है so give any 2 functions of root chances less than 1% इतना बकवास क्वेश्चन शायद नहीं पूछे आया तो तुम्हारा लग नीड ऑफ वाटर बुक में दिया हेडिंग सिर्फ पढ़ना है कुछ काम का नहीं नीड ऑफ वाटर व्हाई डज अ प्लांट रिक्वायर वाटर फर्स्ट रीजन for photosynthesis. Do I need to explain? I hope everybody knows. Photosynthesis, one of the ingredients is water. Second, whenever the plant undergo transpiration, it brings about a cooling effect. So this transpiration which brings about a cooling effect again requires water. Third, to transport the minerals from the roots to the upper part, water acts as a medium. As well as the food which is prepared from the leaves to the various parts of the plant, it's known as translocation. जब मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड को ट्रांसलोकेट किया जाता है and both of them are required a medium which is water so again that is what it is used for. Fourth, mechanical stiffness or turgidity. When you don't water the plant for 3 to 4 days अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हो घर पे बालकनी पे प्लांट्स है 3-4 दिन तक आप पानी नहीं डाल रहे उसको what would you see in that plants मर जाते हैं या मुरझा जाते हैं
So they are building, and that is what we say as mechanical stiffness is lost. The moment you come back after 2 or 3 days, you water the plant, but after an hour, 1 or 2 hours, the plant is back to normal life. Okay, that's what is because of the mechanical stiffness. उसको technical term कहा जाता है turgidity. Do you study what is turgidity? So that is what mechanical stiffness is. So for all these 4 reasons, I require water. Just पढ़ना है, chances of absence are very rare. ये तो कभी नहीं पूछेंगे. Need for mineral nutrients in plants. So हमने कहा कि अब the root absorb water and minerals. So what is the reason for water? Now what is the reason for minerals? So minerals में जितना आपको याद आता है सब mineral लिख देना. It requires molybdenum, iron, zinc, copper, magnesium, वगैरह 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 because they are the components of cell or cell organelles. That is a general answer. थोड़ा specific करना है. So we all know nitrogen are required for protein synthesis. ये नहीं सबसे best. Nitrogen is an important ingredient of DNA formation, RNA formation. ये तो लिख ही सकते हो. Nitrogen is required for DNA and RNA formation. Magnesium and iron are synthesis for chlorophyll. Potassium constituent of protoplasm. Elements form constituents of cell and cell organelles. All the cells are made up of various elements. So all the elements would be required by the plant for its formation, and that is why we require mineral and minerals. So again, chances कोई पूछता नहीं है. Okay. First heading in your book. Characteristic of the roots for absorbing water. सबसे important है. पूछते हैं. Okay. They frequently ask this question. How is the plant? What is the plant characteristics to maximize the absorption of water and minerals? There are 3 points in your books. सबसे पहला point. What is the first point? Enormous surface area or large surface area for absorption. The greater the surface area, more would be the absorption process. अब जिनका सलीना है, उनके नीचे blue box में example दिया हो. What I have said is, if I uproot a 4-month rye plant, okay, and just bore हो रहा है, time pass करना था, 4 month का rye plant निकाला, उसके root hairs दिखाई दे रहे होंगे, उसको भी निकाल के बैठूंगा एक-एक करके. And keep on arranging them in line format. It is something like I am getting bored. बाल निकाल रहा एक-एक करके arrange करते जाओ. तो वैसे I have arranged it for the this. Attendance. This side. हो गया सबका? Okay. Pass it on back person. आगे आगे send कर जल्दी. Now, so when I remove the 4-month rye plant, what I find is small hairs which are coming out. So arrange कर रहा हूँ. It covers 600 kilometer. लिखा है 600. Okay. 600. If I take approx from here, it is from here to Goa. Okay. I think Tamil is almost 545 from here. और उसके आगे और 70-80 किलोमीटर ऐड करोगे तो गोवा के बॉर्डर पे टच कर लेते हो. So almost 600 किलोमीटर तक आपको गोवा चला जाएगा. And that much area is there. अब वो तो चला 4-month rye plant, छोटू सा plant है. Imagine बोर हो रहा था. You uproot a banyan tree. से पूरे banyan tree को ही निकाल देते हो. और काम धंधा नहीं है, root hairs निकाल देते हो. It is said if you remove a banyan tree and सबसे बड़ा जो banyan tree निकलता था, so it may go thrice or 10 times across the globe. इतना उसका surface area होगा. Globe. मैं इंडिया में नहीं बोलूँगा. Okay, that much area it would cover. So that greater surface area for maximum absorption and water and minerals. Then second point को 2 मिनट के लिए skip करते हैं. And then we come to third point. What is the third point? The root hair has thin walls, semi-permeable, fully permeable cell wall, and semi-permeable cell membrane. I think this everybody knows. The cell membrane is semi-permeable, cell wall is freely permeable, whereas the cell wall is comparatively thin, ताकि nutrients जल्दी absorb हो जाए. So that is the reason for having more surface area, and the third point, so that maximum water and absorption takes place. But then, normally they will target the second point for your exam. सबसे important second point. Okay? घुमा फिरा के second point पे आ सकते.
and that is the most important point. Now, what is the point saying? The root here has higher cell sap concentration than the surrounding water. Now, forget about it. What is given over there? You would answer my questions over here. So board दिख रहा है. Okay. So on the board, I have drawn a diagram. Okay. So what's the diagram? क्या क्या दिखाई दे रहा है? ट्री स्टम. एक स्टेम है और एक नीचे रूट्स है. ये क्या जगह है? What is surrounding the roots? Soil. Soil के अंदर क्या होता है? Water है. W for water, M for minerals. ये रूट है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी वाटर और मिनरल्स होंगे. Now my question is very simple. रूट के कंपैरिजन में very small water and very small minerals. Minerals कहाँ पे आता है? रूट या soil? So minerals are more over here. So minerals are less in the roots. तो उसके कंपैरिजन में तो ऐसा होगा ना यहाँ पे. So will be minerals will be less over here. आया ना? So there will be more water there. जहाँ पे मिनरल्स ज्यादा होते हैं वहां पे पानी कम होगा. यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा. यूनिवर्सल रूल है. The minerals will occupy the water plus molecules, so obviously water would be less over here. यहाँ पे minerals के अंदर पानी ज्यादा होगा. Where will the water move in this diagram? First, ऐसे या ऐसे, A या B. Why B? Water always move from higher concentration to lower concentration. प्लांट क्या होगा? प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है या पानी देता है? तुम्हारे किस में दे रहा है? राइट या रॉन्ग? अरे आंसर राइट या रॉन्ग? हाँ, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है ना. अगर ये होता है तो पानी जाएगा बाहर. द प्लांट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली डाई, व्हिच इज नॉट हैपनिंग एज सच. सो ऑब्वियस है ये उल्टा होना चाहिए. व्हाट इज उल्टा? The water should be more over here and mineral should be less. Water should be less over here and mineral should be more over here. और कोई डायग्राम नहीं ना? प्रियाशी एंड रिहान, अगर सो गए होगे तो उठ जाना. यस सर. लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा सामने रख के सो गए होगे. बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि दोनों में से कोई एक तो बोलेगा सर बोर्ड दिख नहीं रहा है. ओके, तो वाटर एंड मिनरल्स, इस केस में एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए. Mineral should be less over here, mineral should be more over here. And that is what my second point describes. A root hair has a higher cell sap concentration. यहाँ पे ये concentration बहुत ज्यादा है compared to the water surrounding. यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है. तब और तभी पानी बाहर से अंदर आएगा. So this condition will now not take place. It will take place is this. Water from a higher concentration starts moving in the lower concentration because minerals are more inside. So अगर minerals अंदर ज्यादा नहीं होंगे तो पानी अंदर आएगा नहीं. Water will be going
आउट। ये आप बार बार पढ़ोगे, इस चैप्टर में रिपीटेड आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन इस चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट बहुत कम ही करना, सभी ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते, कहीं ना कहीं उसका नॉलेज को अप्लाई करना होगा। So that is where it says that the root here has a higher cell sap concentration than the surrounding soil or surrounding water. Am I clear with this part? These are 3 points by which the root can absorb maximum water and minerals. That completes the introduction part of the chapter. यहाँ तक chapter का introduction है. Okay? उसके बाद there is the next heading given over there. To take on a cells of higher concentration than the surrounding water. The thin wall, cell wall thin and permeable, cell membrane thin and semi-permeable. Okay, next heading is your chapter headings. इस चैप्टर में हम क्या बकवास पढ़ने वाले हैं? ये 5 मेन बकवास पढ़ने हैं। आप सबसे बेस्ट पार्ट क्या है चैप्टर में? So the 5 things we are going to cover in the chapter. जो चैप्टर इसी से बना हुआ है देखा जाए तो, पहला इम्बाइबिशन, 2 लाइन का डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल, 3 लाइन में खत्म। उधर बहुत कुछ लिखा है, कुछ काम का नहीं है। एग्जाम में सिर्फ 2 ही चीज आती है, एक तो डिफाइन या 2 एग्जाम्पल्स। दूसरा डिफ्यूजन, अगेन सेम थिंग, 2 या 3 लाइन का डेफिनेशन, 2 या 3 एग्जाम्पल, डन, खत्म। बाकी टाइम पास किया है, डायग्राम ले लिया। तीसरा ऑस्मोसिस, 3 या अगेन लाइन का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और पूरा चैप्टर उसी के ऊपर खींचा हुआ। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एंडोऑस्मोटिक, एक्सोऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, वो सब कुछ इसके अंदर ही है। 2 लाइन का डेफिनेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेन एक आध 2 एग्जाम्पल्स, खत्म। टर्जिडिटी, फ्लासिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑस्मोसिस का है। तो इन शॉर्ट अपना पूरा जो भी पेजेस है वो ऑस्मोसिस का है। ऑस्मोसिस में मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट, 7 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ऐसा खींच खींच के, लाइक च्युइंगम सब जगह खींच खींच के उसको बड़ा बनाना है, वैसे कुछ किया है चैप्टर में। टेक्निकली द चैप्टर इज मच स्मॉलर इफ आई ओनली गो विद द 4 वर्ड्स, 1 2 3 4। अगर ये 4 वर्ड का चैप्टर होता तो आधे पेज के अंदर खत्म हो गया, पर अफसोस ऐसा है नहीं। ऑस्मोसिस को उन्होंने पूरा इन एंड आउट एक्सप्लेन कर दिया। मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ऑस्मोसिस और फ्रॉम दिस पार्ट, ये 2 पार्ट से ही आते हैं। जो नहीं आएगा 1 2 3, नॉट मोर देन 1 मार्क या मैक्सिमम 2 मार्क्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो 2 मार्क्स का भी नहीं आ सकता, 1 ही मार्क का है। डिफ्यूजन एक आध बार 2 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम्पल वाली। इम्बाइबिशन भी शायद 2 मार्क के लिए, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी ओनली फॉर 1। Okay, so on that note we start with the first definition, that is first process, that is imbibition. It is a phenomenon by which a living or a dead plant cell absorb water by surface attraction. Keyword is living or dead. Then most of you write the absorption of water by plant cell or surface attraction. That is a phenomenon by which a plant cell absorb water by surface attraction. You forget to write living or dead. Board is very clear. Keyword is living or dead because लिविंग से एब्जॉर्ब करता है, समझ में आता है,
It is also important to understand that dead plant cell may be absorbed. So dead plant cell absorb water by surface attraction. Example, cellulose. Now what is cell wall made up of? It is either made up of cellulose or it is proteinaceous in nature. So when I say cell wall is cellulose or protein nature, cell wall protein nature नहीं होता है. Cell wall का content में ज़्यादा protein होता है. Like your sunflower seed या walnut seed वगैरह में protein ज़्यादा होता है. So because of that, they are hydrophilic. What is hydrophilic? What is opposite to it? Hydrophobic. जो पसंद आए वो हाइड्रोफिलिक, जो अगेंस्ट है वो हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक is not affinity and hydrophilic is having affinity towards. So that cellulose or proteins are hydrophilic substance. मतलब they attract water. So whenever they come in contact with the water, they would definitely absorb water in that case. Now, आपके बुक में examples सलीना में दिया नहीं है, पर गोयल ब्रदर्स में example दिए हुए हैं. First example, if I take a glass bottle and it completely filled with seeds, पूरा का पूरा seed में pack कर देता हूँ, and I put some amount of water into it, what will happen? The seeds will come in contact with the water and they will take in the water inside by a process known as imbibition. उसके वजह से seeds थोड़े swell होंगे, थोड़े से, but all the seeds will start swelling. Is there any space in the chamber in the bottle? No. As a result, what will happen? The glass bottle would have a crack or a break onto it. So glass bottle टूट जाएगी. Plastic bottle में नहीं होगा ये. Okay? But glass bottle में वो उसके crack आ जाएगा या टूट जाएगी. Second example. If I take a balloon filled again with seeds, put again same water into it. After some time, थोड़ा balloon का size बढ़ गया होगा because of the seeds swelling over there. Third, dry seeds when they absorb water simply burst open. Okay? That's again because of imbibition. Last, जो आपके बुक में properly दिया हुआ है, in a rainy season, the main door, okay, wooden door, not the door, the wooden door gets warped. ये word लिखा हुआ है. Okay, warp मतलब to swell या to become jam. आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे आपके main doors आवाज करते करके और वो बंद भी properly होते हैं. बारिश जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद normally वापस same door यहाँ पे भी होगा. It will get jammed in that part. So what is happening over there? The door absorbs water या moisture. Obviously अपना बारिश main door पे नहीं गिरता. कि इतने भी अपन रहते नहीं कि डापड़े बारिश गिरा. सर मेरा main door पे बारिश गिर रहा है. Okay? We are in a building, so वहाँ पे कहीं दूर-दूर से भी बारिश के ऊपर गिरने वाला नहीं. So when that is the condition, it absorbs moisture from the environment. And that it gets swells. Because of that, उसमें gap already कम था, so it gets stopped over there and it gets lengthy over there. अब सबसे important चीज, door मुड़का है, living or dead? I hope it is dead. Okay, so it's a dead part. That is what it shows. It has dead plant cells. So living plant तो absorb कर ही लेगा, but dead plant cell. Now what is by surface attraction? The surface attraction का simple example है. If I put a glass of water on this floor, और उसके बाजू में just जहाँ पे पानी के कॉर्नर जा रहा है, वहाँ पे मैं डस्टर रख देता हूँ. There's a sponge. What would you observe after some time? Sponge ने पूरा पानी soak कर लिया, soak कर लिया. That's what exactly happens. The moment it comes in contact with water, it absorbs the water, and that is known as by surface attraction. So one mark definition: the phenomenon by which a living or dead plants absorb water by surface attraction. One mark के लिए आया. Give any example. So best example is this. अब उल्टा आएगा. Direct example कभी नहीं पूछे. What they will ask? Why does a main door of your house becomes cranky or jammed during the rainy season? Yeah, it becomes warped during the rainy season. Give reasons. तो क्या लिखोगे? तो एक ढंग का आंसर देगा. बोलो मैडम. बैठ के बोलो. It absorbs. Good. 0 मिलेगा. Then I am not seeing the answer what you are writing. मुझे bio में technical term चाहिए. Okay. Your main point is I need to have a technical term.
डोर सॉइल होता है मुझे पता है, पर मुझे चैप्टर के रिलेटेड में वो वर्ड आना चाहिए. So what you will write over here during the decision, the door absorbs moisture from the environment by a process known as so it swells. तो वर्ड आपके सिलेबस मतलब आंसर में आना ही चाहिए. या the water is absorbed by the door by imbibe, or it imbibes water. Okay, ये भी आ गया तभी चलेगा, पर imbibe ये वर्ड आना ही चाहिए. Is it clear to everybody? कोई डाउट है? Shall I go ahead? Okay. Next is diffusion. Diffusion आपने पहले भी पढ़ा है लोग बस. So what is the definition of diffusion? The movement of fluids from the region of higher concentration to a region of lower concentration. एक रॉन्ग है और एक मिसिंग है. एक मिनट याद आ गया. लास्ट लेक्चर में 2 जन को बाहर निकालो. कौन से को? और इसके पैर मिल क्या है? बात क्या? अभी बोलो. ओके, अगेन राइट है, कुछ मिसिंग है. इसका मैंडेरिन गुड. थर्ड पार्ट जो मिसिंग था वो ऐड कर दिया, पर तभी भी रॉन्ग ही है. Then diffusion is not liquid, diffusion is not gaseous, diffusion is on all 3 states. So the movement of molecules of a substance, ब्रैकेट में चाहिए तो solid, liquid or gaseous, from higher concentration to lower concentration, when the two are in is known as diffusion. Now we try to understand what is the difference between इनके definition. He said liquid, he said gaseous. Just सिर्फ liquid और gaseous में नहीं होता. That's the main difference between osmosis and diffusion. The diffusion can occur in any 3 states: solid, liquid and gaseous. पहला example. If I take solid example, solid नहीं होता, solid liquid होता है. So you take a crystal of sugar and dissolve it in water. So after you start dissolving, what happens? Can you see the crystal now? So can I say the sugar has diffused into the water? Second example, salt crystal in water. Third example, potassium permanganate in water. जो आपके बुक में डायग्राम भी दिया होगा. So when I put a potassium permanganate in the water, what is happening? वो crystal जो है, that is higher concentration. After some time, when I start stirring, the entire water turns purple color. So what is it happening? It has diffused into the water. So the crystal molecules have diffused into the water molecules. That is why after some time, the entire liquor has turned colored. सर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने एज अ टीचर के एक क्वेश्चन ना डायग्राम के लिए आएगा, पर 1 मार्क के लिए डायग्राम के लिए भी आएगा. तो इमेजिन मतलब बोर्ड क्या कुछ कर सकते हैं 1 मार्क के लिए ड्रॉ करने के लिए. ओके, सो दैट्स अबाउट द पोटेशियम परमैंगनेट, सॉलिड लिक्विड. अब आते हैं लिक्विड. ओके, तुमने बोला लिक्विड का, तो एग्जांपल दे सकते हैं लिक्विड का. मिल्क एंड वाटर, मैंगो सिरप, रोज सिरप, आजकल गर्मी में जूसेस पीते हो, एंड वाटर. मैं तो सबसे बड़ा एंड वाटर. आई होप समझ में आ गया. दारू और पानी है ना. सो ऑब्वियसली इनपुट अल्कोहल, उसके हमरा पानी पियोगे और पिया जाता है. डिपेंड्स, कई तो डायरेक्टली. यस, उधर का ग्रुप है ना. So that's about alcohol and water, or lime juice and water, or mango juice or water, whatever. Third example, gaseous form. Okay, what is gaseous form? Example. So when I press a perfume bottle at one corner of the room,
After some time, the fragrance spread throughout the room. So what is happening? Higher concentration of molecules in the perfume bottle diffuse into the air. So it will spread throughout the room. Yeah. Second example is burning of incense stick. I hope incense stick पता है. अगरबत्ती से कहते हैं. So from there, the gas spread out inside the entire environment. Third, which you can do and check also. Perfect example of that. घर पे जाना, LPG होगा, पाइप निकालना और सिलेंडर ऑन रखना. Okay, after some time you'll have a beautiful smell in the house. So in that LPG gas बाहर आ रही है. और कुछ ज्यादा ही बोर हो गया होगा. Okay, अपने वैसे पूरे बिल्डिंग को भी लेके जाओगे साथ. Okay, God gift building भी buy one get all everybody free. Okay, so that's about the LPG which is a gaseous form. So all these are nothing but diffusion. तो यहाँ पे examples of diffusion, liquid का dye का दिया है, crystal का दिया हुआ है. This is the free movement of molecules of a substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration, and the two are in direct contact. एक ही मात्रा है, defined to diffuse. Okay, example अगर आया तो कोई बकवास example दिया जाएगा, बस एक और वो एक, इसके ऊपर कभी नहीं आ सकता. Next, osmosis. Now, we would go ahead with the next heading, that is osmosis, और अपना पूरा चैप्टर ही osmosis. तो यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे वर्क करेंगे and we try to derive the definition of osmosis. Is a beaker, a separate beaker between them a partition, semi-permeable membrane. A side, B side, and I fill the beaker with water. How many molecules on A side? B side? How many molecules are the same across? Can I say that equal concentration on both the sides? Okay. Now, in one of the side, I put some sugar. So sugar will occupy space in water. Okay. यहाँ पे, which is having higher concentration of water? B. How much? Higher concentration. यहाँ पे कितने molecules है? 12. यहाँ पे 8. Okay. Now, by default, the definition of osmosis, the movement of water molecules from its higher concentration. The keyword is its because of it. From क्या solid भी होता है, ये भी होता है. So from its higher concentration to its lower concentration across a semi-permeable membrane is known as osmosis. So first definition I derived from water concentration itself. पानी का movement होता है. It is a special type of diffusion wherein the water moves from higher concentration to its lower concentration across a semi-permeable membrane is known as osmosis. Am I clear? सबको समझ में आया? अब second, can I say this is a dilute solution? And इसके comparison में dilute है, and this is a concentrated solution. क्या चलो अपन उसमें sugar डाल देते. So I put some sugar over here also, sugar over here also.
Still it is dilute more over here and still it is concentrate over here. ज़्यादा sugar है तो concentrate, कम sugar है तो dilute. How many water molecules here now? 10. How many over here? 8. So where will the water move from? From where to where? So again same होगा. So now can I say it as the movement of water molecules from a more dilute solution to from a dilute solution to a concentrate solution across a semi-permeable. Is it right? So I am defining it same again in terms of dilute to concentrate. Third definition. Same dilution के ऊपर ही गया है. It is a movement of water molecules from a more dilute solution to a less dilute solution. It's same. आया ना? मैं concentrate के बदले से this is more dilute and this is less dilute. Again, my definition remains same. Okay, so I am defining it in terms of more dilute solution to less dilute solution across a semi-permeable membrane known as osmosis. Yeah, I can say from a less concentrated solution to a higher concentrated solution, a strong concentrated solution is known as osmosis. Yes or no? तो और एक बार एक्स्ट्रा आ गया from a less concentrated or from a weak to strong concentrated solution. Last definition. Now can I say it is the movement of water molecules from a hypotonic to a hypertonic solution, or it is the movement of water from a lower solute concentration to a higher solute concentration across a semi-permeable medium. Yeah, na. I'm repeating. It is a movement of water molecules from a lower solute concentration to a higher solute concentration. Right? Yeah, wrong. अरे भगवान ने मुंह दिया है, हाँ या ना? मुंह दिया है, कान दिए, good. आप बोल सकते हो? So is it right or wrong? Then what is this? ये solute है, sugar, so it has lower solute concentration. It has higher solute concentration. So water यहाँ से ही move करना, higher to lower. But पहला मैंने कहा was in terms of water movement. Now I'm saying water is moving from lower solute concentration to a higher solute concentration. This is known as osmosis. कोई doubt है? Sure. अब based upon this, तो आप जो चाहिए definition आप लिख सकते हैं. But keywords are it has to have higher or lower, lower or higher, strong or weak, yeah, more dilute to less dilute across a semi-permeable medium. कोई doubt है? Okay. So osmosis is a diffusion of water across a semi-permeable membrane from a weak solution to a strong solution. जो अपन ने यहाँ पे लिखा है. Next. So osmosis, it is a diffusion of water molecule across a semi-permeable membrane from a more dilute solution to a less dilute solution. That is across a semi-permeable membrane already पहले लिख दिया था. That also can be a definition of it. Now based upon this, एक सेल के अंदर पानी जाएगा, एक सेल के अंदर पानी बाहर निकलेगा. So based upon that, we have three types of osmosis: inward, outward, and no osmosis. Okay? जब तीनों में से definition कोई एक आता है, तो normally कोई पूछते नहीं है. तो अगर आ गया अंदर, तो आप लगती हो because आपको definition एक ही पढ़ना है. तीसरा वाला कभी नहीं पूछेंगे, no osmosis. बचा कौन से? दो. तो से कोई एक पढ़ोगे, उसका सिर्फ word change करना है, second बन जाता है. So what is inward osmosis? Is the inward diffusion of water. Then whenever I'm referring osmosis, endo or exo, अपन सेल के रिलेशन में एंडो को, तो सेल के रिलेशन में पानी अंदर आना, सेल के रिलेशन से पानी बाहर जाना. तो यह inward diffusion of water through a semi-permeable membrane when the surrounding solution is less concentrated. तो पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है,
इस केस में तो मान के चलना ये एक सेल है, this is a cell and water is entering into a cell, so it is inward diffusion of water through a semi permeable membrane when the surrounding solution is dilute or the surrounding solution is less concentrated or the surrounding solution has higher lower solute concentration. सभी का मतलब एक ही है. Is it clear? अगर ये समझ में आ गया तो what happens in the resulting case? पानी सेल के अंदर आएगा. What will happen to cell? It would swell. A process known as endoosmosis. डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? बाकी मुझे समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, पर दो चीजें समझ में आनी चाहिए मुझे. एक तो अपन बॉर्न ही हुआ है दो चीज करने के लिए, एक तो पूछना और एक तो सोना. इसमें हमने मास्टरी ऐसी भी अचीव कर ली है. chia seeds, okay, sabja chia, so when you put them in water, milk, etc., after some time they swell, showing that the water has entered into the cell, showing it is endoosmosis. सबको डेफिनेशन समझ में आया? हाँ ना. सो अभी इसी डेफिनेशन को एक्सोस्मोसिस में कन्वर्ट करना. इज द diffusion of water through a when the surrounding solution is the सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है. इनवर्ड के बदले आउटवर्ड, लेस के बदले मोर कॉन्संट्रेटेड. दैट वुड फॉर्म योर इनवर्ड के बदले आउटवर्ड हो गया, सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस के बदले मोर कॉन्संट्रेटेड हो गया. तो जस्ट नीड टू लर्न वन डेफिनेशन, वर्ड चेंज करो, अपोजिट डेफिनेशन आ जाता है. एग्जांपल raisins. Okay, so when you put the grapes in a stronger sugar solution or stronger salt solution, वो और ज्यादा shrink होते जाता है. Another example of this, अपने डे टू डे लाइफ में पिकल इसी फॉर्मेट से बनता है. मम्मी पिकल्स को रखती है ड्राई करने के लिए, but at the same time उसके अंदर बहुत सारा ऑयल और सॉल्ट डाला जाता है. So it forms a concentrated solution and the result पिकल धीरे 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 वो मतलब मूर्ते हैं, क्या कुछ बोलते हैं. That is happening actually in the pickle. Okay, it becomes slightly dry and shrink because of the or taste enhance हो जाता है. वो बात अलग है कि आप खाने के लिए यूज कर रहे हैं पिकल्स के लिए. So that's exactly what happens. Am I clear? Okay. So what would be no osmosis? What is no osmosis? वहां से ऊपर इधर आके बैठ. से एक भी उठेगा वहां पे जाएगा. And in my lectures henceforth I do not want कभी भी साथ में नहीं बैठे. ये लड़कियां खाने वाली नहीं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुमको पीछे जाके ट्रेड करने के लिए. Okay, so I think that's about exosmosis. अब something not equivalent but there is something known as no osmosis. मतलब क्या होगा? Both the concentration will be same. So there will be no inward, there will be no outward. कभी नहीं पूछती. Okay, next. So इसमें shrink हो गया. अब जो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं लाइन से जा. Okay, so तुम्हारे बुक में एक ही दिया हुआ है या दो दिया है मैक्सिमम या तीन दिया है, पर तुम्हारे केस में पूरा पैटर्न है. ओके, लगते हैं एक्सपेरिमेंट को अच्छा पूरा लेफ्ट राइट करके खिलाया. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट. अब पहला चीज एक्सपेरिमेंट हम कर क्या रहे हैं वो समझना. आवर एम इज
क्या एक्सपेरिमेंट में ऑस्मोसिस होता है ये चेक कर। सो माय फर्स्ट थिंग इज ऑस्मोसिस होने के लिए व्हाट आर माय टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, और सेकंड सेमी परमेबल। तो मेरा एक आंसर आपने राइट किया। वन रिक्वायरमेंट इज पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज माय सेकंड रिक्वायरमेंट? वाटर से ही रिलेटेड है, तो आपने आधा आंसर दिया। सॉल्यूशन मतलब ओके, इफ आई से क्या शी इज वेरी क्लेवर, किसके हिसाब से? नहीं मतलब वेरी क्लेवर इन व्हाट टर्म्स? कैन आई कंपेयर हर विद समबडी और जस्ट लाइक दैट ओनली? जब मैं कंपेयर करूंगा तभी बोलूंगा ना शी इज वेरी क्लेवर देन हिम और हर और हिम और whoever it will. ये वैसे ना वेरी क्लेवर, तो यही नहीं कंपैरिजन करो तो मतलब ही इट लाइक यू रनिंग अ रेस, ये पहला आया रेस में अकेले ही भाग रहा था तो क्या मतलब है? there has to be somebody to compare, बाबा ये पहला आया दूसरा तीसरा आया एग्जैक्टली सेम है कि when I say what is my thing to prove, I require two things. एक, two different concentrations, and second, semi permeable membrane. Is it clear? अब पहला जो बकवास दिया एक्सपेरिमेंट का वो ये दिया है कि बाबा ऑस्मोसिस होने के लिए आई रिक्वायर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो व्हाट आई एम कीपिंग स्टेशनरी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं दो चीजों को ढूंढना है, तो मैं एक चीज को कांस्टेंट रखता हूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और बाकी को चेंज। फिर मैं क्या करूंगा, क्या ढूंढना है मुझे? क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, तो मैं इसको नहीं करूंगा, इसको कांस्टेंट रखूंगा, एंड दैट इज व्हाट एक्सपेरिमेंट इज फॉलो। चल आई स्टार्ट। अरे हाँ यस सर। सो रहे हो क्या है सब लोग? नहीं ठंडी लग रही है? हाँ बोर हो रहा है? नहीं, एक काम करना मेरे लिए, 2 मिनट सब लोग खड़े रहना। मैं बोल देता था आपको कि अपनी जगह पे हॉक करने के लिए पैसा होल्ड रखता है, तो अगर आपने हॉक कर लिया शायद नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे कि there would be a small earthquake over here which I don't know what. 2 मिनट खड़े रहना और मैं पानी पी लेता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज इनको है, मैं घर बैठे कुछ भी कर, सो भी गया तो फर्क नहीं पड़ने वाला। यस ना रियान? कई जन तो आंखें खोल के भी सोते हैं। क्या शर्माना लड़की किधर है? खतरा है यार, मैं अकेला क्यों खड़ा रहूं? कभी कभार लोग मुझे कंप्लेंट नहीं चाहिए, एजेंट तो हमेशा देते रहते हैं मुझको किसी ना किसी बात में। एक डाउट है मुझे, मतलब जनरल नॉलेज के लिए, तू जब भी पीछे बैठा रहता है किधर बैठा रहता है, तो एक तो बैग आगे रहता है और सब दीवार में घुस जाता है, तो क्लास में ऐसे पूरा बैठा रहता है। अब उसके हिसाब से मैं दो ही इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि यहाँ पे तो ऐसा बैठा नहीं है ना बैग है, तो मतलब तेरे बाजू वालों से तुझे खतरा है इसके लिए बैग लेके बैठा है, ऐसा कुछ है? नहीं मुझे लगा ऐसा, तो मैं वहां पे बैठ गया था ना। इसका राउंडर है सुनने के लिए है।
गर्ल्स कैसे करते हो? बॉयज जा रहे हो ना? ओके, अब सर मैं एक ही डायग्राम डालने वाला हूँ, बहुत सारे हैं, फिर एक ही डायग्राम डालूंगा, हम उसी के ऊपर सब कुछ वर्क करेंगे। अब I need to take a beaker, I hope समझ में आ रहा है, fill that beaker with the water, तो पानी ले लिया बीकर के अंदर, I take a crystal funnel. Now what is crystal funnel? कोई पूछने वाला नहीं, ड्रॉ करना है या दिखाना होगा। crystal funnel नॉर्मल फनल होता है, फिर इसका आर्म बहुत बड़ा होता है और उसका फनल का माउथ थोड़ा छोटा होता है, और ये नॉर्मली ग्लास का भी होता है या प्लास्टिक का भी होता है। How it is glass? Okay, so that crystal funnel I have taken. अब इसका ब्रॉड माउथ है, मतलब पीछे वाला जो ब्रॉड माउथ है, ऊपर ट्यूब का स्मॉल माउथ है। सो दिस एंड आई वुड टाई अ सेलोपेन पेपर, लिखा है सेलोपेन पेपर। व्हाट इज सेलोपेन पेपर? पार्चमेंट पेपर और सेमी परमेएबल पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या होता है? गुड, बेकिंग के लिए यूज होता है, बटर के ऊपर वो बटर का पेपर होता है वैसा। सो अगर भूले भटके से कभी किचन या कुछ करने गए होंगे तो ऐसा कुछ पता होना चाहिए, वरना नॉट आवर कप ऑफ टी सर। मम्मी बोलती है बेटी अभी कुछ मत करनी, शादी के बाद सब कुछ करेगी, तो अभी तू एंजॉय कर। ओके, 99% ऐसा होता है, 99 एक्सेप्शंस कैन बी देयर। ओके, और वैसे भी क्या बनाने आता होगा? मैगी या चाय, बस। उसके अलावा वो कई को वो भी नहीं आता। आता है क्या मुझको? ऐसा ऐसा कहीं को कुछ भी नहीं आता है, ये ऐसा भी होता है जो कुछ भी नहीं आता। पॉसिबिलिटी इज देयर। बॉयज 100 में से एक नमूना होगा जिसको कुछ नहीं आता, 99 को सब कुछ आता है। अजमी के आजकल बॉयज अच्छा खाना बनाते हैं, और एक जो नमूना होता है ना, वो माइंड में ही होता है, बिकॉज एक हाईली पैम्पर्ड एक लौता होगा शायद से, ये एक पॉसिबिलिटी है। या दो बहन, बड़ी बहन और छोटा भाई, तो राजा महाराजा, ऐसा कोई है अपने आप को? जो छोटा लास्ट नंबर है बॉयज में और बड़ी बहन है, यही होता होगा ना? कुछ भी उठाना नहीं होगा, कभी कभी यार छोटी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं करता होगा। बिकॉज वेरी रेयर चांसेस है क्या छोटा भाई बहन के लिए कुछ करेगा। हाँ कर सकता है, सिर्फ घास उठाने का काम। ठीक है, कुछ भी हुआ मस्त सब मम्मी डैडी को सब करके आएगा ना। इन दिस केस इलन तो पिस्टल बना है, सिलिकॉन मेम्ब्रेन डाल दिया, पार्चमेंट पेपर डाल दिया, एंड इन दैट यू विल फिल शुगर सॉल्यूशन। हैव आई यूज्ड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस? हाँ ना, which is concentrated, which is dilute water. Apparatus को ऐसे सेटअप करना है। Okay, now I need to take a control for this setup. What is a control setup? In which the experimental component is missing. तो हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करना है? For osmosis to occur, I require two different solution, concentration of solution. तो मैं उसी को गैप कर दूं। गैप करना मतलब पूरा का पूरा गैप नहीं रहेगा। Instead of that, I take कंट्रोल में मैंने अंदर भी पानी लिया और बाहर भी पानी लिया है। So have I taken sugar concentration? In the system also water, outside also water. Can you give me any other control for this? Good. Then I can do another control. मैं क्रिस्टल फनल के अंदर शुगर सोल्यूशन जो पहला वाला लिया है वही लूंगा और बाहर भी वही रखूंगा। So is it a two different concentration? No. So then I can have two control. एक तो शुगर शुगर, एक तो वाटर वाटर,
और एक्सपेरिमेंटल में क्या, शुगर और वाटर। इज इट क्लियर? अब चलन ध्यान से सुनिए। पहला एक्सपेरिमेंट, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रूफ करना। इसमें क्या आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट। उसी का नेक्स्ट सेटअप क्या है, कंट्रोल है। कंट्रोल में तो सेटअप होंगे शुगर शुगर या वाटर वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसका ही वेरिएशन। व्हाट इज द वेरिएशन, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। फर्क क्या है, वहां पे था शुगर कॉन्सेंट्रेशन और वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या था, वाटर एंड शुगर। वाटर बाहर, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। अब मैं इसमें उल्टा करता हूं, शुगर बाहर और वाटर इनसाइड। ये सेकेंड सेटअप हो गया। सेम एक्सपेरिमेंट दो बार दिए। तीसरा भी दे सकता हूं, व्हाट इज थर्ड सेटअप, बट यहाँ पे बाहर भी शुगर अंदर भी शुगर। तो ओनली डिफरेंस इज, बाहर अगर 5% है तो अंदर 10%। अगेन मोर डाइल्यूट लेस डाइल्यूट, टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा सेटअप ये भी दिया हुआ डायग्राम में लिखा है। ओके, सो एक ये ऊपर का 2 नीचे का 3 सिर्फ लिखा हुआ है सलीना में, ज्यादा कुछ है नहीं उसके। सो नाउ व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 1 hour? डायग्राम दिया जाएगा आपको and they would ask what is the above experiment showing. So osmosis, define the given term in the A. So osmosis को define, redraw the diagram. What would you observe after 1 hour? तो 1 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, या राइट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 1 hour? तो क्या लिखोगे, वाटर लेवल wrong, solution will rise up where, in the crystal. When you need to water to be right, the sugar solution in the crystal funnel would rise up. Then सिर्फ sugar solution rise नहीं लिखना है, किधर rise हो रहा है ये important. The sugar solution in the crystal funnel rises. Am I clear? What is another observation? The water level in the beaker goes down or decreases. So there are 2 observations. One, sugar solution level in the crystal increases, and second, the water level in the beaker decreases. Am I clear? कोई डाउट है? तीसरा ऑब्जर्वेशन, अब ये पोस्ट ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट में सब हो गया ऊपर नीचे, उसके बाद मैं क्रिस्टल को बाजू में निकालता हूं एंड आई ड्रिंक द वाटर। मैं वो बीकर का पानी पीता हूं। सो व्हेन आई डू द एक्सपेरिमेंट, साफ सुथरा पानी डालूं और शुगर सॉल्यूशन भी साफ सुथरा और सब कुछ क्लीन करके डालूं, ऐसा अज्यूम कर। क्या आपको टेस्ट नहीं करने वाले बात अलग है, तो assumption. So I take the beaker water and drink. What would I feel? It is not sweet. So what does it show? क्या प्रूफ हो रहा है उसमें? ऑस्मोसिस। और तो पानी ऊपर नीचे हो गया, दूसरे विषयों से समझ आ गया। It shows the membrane acts as a semi-permeable membrane where it allowed water to move from the beaker to crystal funnel, but not the sugar molecules from the crystal funnel to beaker. अगर sugar molecules नीचे आ जाते थे, तो पानी क्या होता, सोड होता, हुआ नहीं।
So the membrane doesn't allow the sugar molecules to move. It only allows the water molecules to move. So that's the experimental part. यहाँ पे before diagram ये है. Afterwards, this is what happens. The sugar solution rise up, and the water level in the beaker has gone down. इसका interpretation. Their sugar solution rises, level of water drops. Water in the beaker, if tested, is not found sweet. So you have water has passed the cellophane membrane. Sugar has not passed from the cellophane to beaker. So cellophane membrane is acted selectively permeable or semi-permeable. And for osmosis to occur, I require two different solutions. ये prove होगा. अब experiment modified. Same experiment क्या modified किया है? Concentrated sugar solution and dilute sugar solution. जो मैंने कहा था ये वाला. या you can have sugar outside and water inside. एक ही experiment है, सिर्फ observation change होगा. अगर sugar outside और water inside है, तो क्या दिखाई देगा आपको? The sugar solution in the beaker would rise, and the water level in the cellophane would fall down. Okay, that would be happening if this is the condition. इस condition में क्या होगा? That solution में the that solution will go down, and the sugar solution in the beaker would cellophane will rise up. Same है, सिर्फ हमने concentration को change किया. Okay, so that's the third. मतलब एक दो तीन हो गए. अब उसके बाद पहले तीन एक्सपेरिमेंट में हमने टू डिफरेंट सॉल्यूशंस को टेस्ट किया. अब हम टेस्ट करेंगे क्या ऑस्मोसिस के लिए आई रिक्वायर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो व्हाट आई डू इज अब टू डिफरेंट सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी रख दिए है. बीकर में पानी, सॉल्यूशन का क्रिस्टल फनल. नाउ इंस्टेड ऑफ सेलोपेन मेम्ब्रेन आई हैव टेकन अ रबर शीट. और इंस्टेड ऑफ अनदर एक्सपेरिमेंट में instead of that, I have taken a muslin cloth. What is rubber sheet? The shape of membrane. Not permeable. Impermeable? Yes or no? So what would you observe after certain time? दिखाई देगा? Will there be any change? No. The water in the beaker level would remain. The sugar in the system will remain. The membrane is not allowed to move anything across. So it is impermeable. Okay. Muslin cloth. Okay. Muslin cloth क्या होता है? Normally एक कपड़ा होता है, कॉटन का वाला. Okay. मम्मी हमगढ़ बनाती है, प्रेम आएंगे उसे पानी निकल जाता है. तो ऐसा कुछ है. Normally एक करके हैंगर की और पड़ा दो तो वैसे ही होगा. Okay. So what is happening after some time? ऑब्जर्व क्या करोगे इसमें? हाँ, वो इंटरप्रिटेशन होगा. दिखाई क्या देंगे? तो गर्म ऊपर तो दिखने वाला नहीं है. Then the sugar solutions from the crystal will start mixing in the water. You might see the sugar level and water coming to one same height. Yeah, it may overflow also, but normally it will come down. Okay, one. When you drink the water from the beaker, it will taste sweet. Shows that the muslin cloth is acted as a freely permeable membrane. Am I clear? Without experiments में अब done. Very rare case में आता है जब diagram दिया जाएगा, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, and they say for in the given diagram what change you need to do to bring about osmosis. Instead of muslin cloth, what you will write? I need to take a semi-permeable membrane. Give me two examples of semi-permeable membrane. Good. Then you are not writing cellophane paper or parchment paper or whisking bag. They ask you to give two examples. आपके book में clearly लिखा होगा है. Two naturally occurring semi-permeable membrane, egg membrane and animal bladder. I think somewhere over here. Experiment number 2 में शायद दूसरा line लिखा है देखो.
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 थर्ड लाइन इट इज अ सलीना आपके बुक पे ढूंढना किधर है ऑस्मोसिस के नीचे की तरफ ओके अचलन एग मेम्ब्रेन आई होप एवरीबॉडी नोज अंडा खाते हो व्हाट इज द एग मेम्ब्रेन वेरी गुड मेम्ब्रेन होता है सॉरी इसके अंदर योग होता है वो योग को सेपरेट करता है कितना अंडा खाते हो वैसे अरे शर्माती भी हो खाते हो ना उसमें शर्माना है ये ऐसे खाना मत ऐसे खाना मत नहीं पता है व्हाट इज द आउटर मोस्ट पार्ट शेल बॉईल करने के बाद शेल जब निकलता है कभी कभार प्रॉपर निकलता है तो मेम्ब्रेन आती है कि प्रॉपर छिलका निकालना पड़ता है जस्ट शेल के अंदर होती है दैट व्हाइट कलर मेम्ब्रेन इज नोन एज एग ओके और योग के ऊपर नहीं होता so that's the egg matrix okay animal bladder most commonly uses gold bladder for god's sake do not write human bladder it is the right answer हम use नहीं कर so don't write exceptional answer in the exam okay gold bladder is the most commonly used bladder as a semi permeable ये naturally occurs artificial में whisking bag parchment paper या cellophane paper. So they are not anything, then you better write egg membrane and gold bladder. अगर specify किया natural तो ये लिखना है. पर अगर specify किया artificial और human made तो ही आप लिखोगे cellophane paper, parchment paper और whisking. Am I clear? Shall I go ahead? अब वापस एक modified दिया. तुम्हारे बुक में दिया नहीं है सभी नाम में अब ये अननेसेसरी था मतलब पेज को बढ़ाया ऐसे नाउ व्हाट इज एक्सपेरिमेंट सेम है जैसे डिजिटल फनल था वही यूज किया सिर्फ फर्क क्या है डिजिटल फनल के जगह पे मैंने कैपिलरी ट्यूब लिया मार्कर की तरह और भी पतला होगा समथिंग लाइक योर पेंसिल so I have just taken a small tube like a pencil दो एंड फ्री है इस एक फ्री एंड के ऊपर मैंने क्लॉथ को टाई कर दिया व्हाट इज अ क्लॉथ विस्किंग बाय यहाँ पे मैंने थ्रेड से टाई कर दिया अब नीचे वाला क्लॉथ ऐसा वो क्या बोलते हैं ड्रेस की तरह खुल गया होगा सा या लुंगी की तरह सा स्प्रेड आउट हुआ रहेगा अब उसको सब पकड़ के टाई करना है नॉट ओके सो यहाँ पे नॉट टाई किया वैसे सो इट बिकम्स अ बैग यू कैन से वो पोटली या जो भी है ओके अब उस पोटली के अंदर आपको शुगर सोल्यूशन डालना है जो आपने पिछले फनल में डाला था तो यहाँ पे डाल दो बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व द शुगर सोल्यूशन इन द पिछले फनल विल राइज वहां पे यहाँ पे सिर्फ वर्ड चेंज करना है द शुगर सोल्यूशन इन द कैपिलरी ट्यूब राइज बस इतना ही फर्क है एंड दिस इज टाइम पास के लिए दिया एम आई क्लियर चलो गो अहेड नॉट रिक्वायर्ड ये अभी फिलहाल करेंगे नहीं ये भी नहीं करेंगे हाँ ये करेंगे आंसर मैं नहीं करने वाला आप करना फर्स्ट वाला सेकेंड कोई बोल सकता है एनीबॉडी जो घूमना बहरा नहीं है वो बोल सकता है बोल मेन तो वो है इट्स लाइक यू आर राइटिंग योर नेम आगे मिस्टर या मिसेस लिखना भूल गया पता कैसे चलेगा कौन क्या है नेक्स्ट थर्ड वन क्या लिखोगे लेवल ऑफ शुगर राइजेस distal funnel में पूछा तो level of sugar solution in the distal funnel rises shortcut मारना इस solution में
हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट जहाँ पे सॉल्ट या शुगर ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपर, और जहाँ पे कम होता है उसको बोलते हैं हाइपो। तो इस शुगर सॉल्यूशन हाइपर या हाइपो? नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आंसर किया ना पास। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल which is represented by the sugar solution. You can say that. Name the part of the plant cell which is represented by a sugar solution, vacuole, and what is that solution referred as? Cell sap. Am I clear? आगे बढ़े। ये बाद में करेंगे। अब टेक्निकली या प्रैक्टिकली how long osmosis should continue? Until you obtain exercise solution. Good. Till the concentration on both the sides become equal or same, it should continue to occur. अब वो तो ऐसी बात होगी, जब मार्केट से कार या बाइक खरीद के लाए, उस पर कंपनी बोलती है क्या 50 का एवरेज देता है यार बॉयज, कुछ भी नहीं आता तो समझ में आया, बाकी तो कुछ नहीं आता, पर बाइक कार के बारे में ऐसे सुना ही होगा। Do we get the same average what company claims? ज्यादा मिलता है या कम मिलता है? कल से आगे बॉयज दिखना बंद कर दो। गर्ल्स एक्स्ट्रा ड्रेस है, अपने सहेलियों को दे देना विद द मेकअप किट, गिफ्ट, बर्थडे किट। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। Have a break and come back. आप ही करते हो बंद करे
उसके बाद वाला सही बोलेगा ना, उसके बाद तो मैं करेंगे।